The topic of discussion is reaction kinetics, and the subtopic is order of reaction. So now we will discuss what is order of reaction. For a general reaction between A and B, where A moles of A and B moles of B react to form C moles of C and D moles of D. So equation would be similar जो हम previous slides में देख चुके हैं. We can write rate equation as R equals to K A raised to power A while B raised to power B. So B और A जो है ये moles हैं, उनकी concentrations हैं. So the exponents give the order of reaction with respect to individual reactants. So order of reaction जो है वो हमें basically exponent से मिल रहा होता है. अगर हम A के लिहाज से देखें तो जो order होगा वो A होगा, और अगर हम B के लिहाज से देखें तो order B होगा. So जो overall order होगा वो हम A plus B करके फाइंड आउट कर सकते हैं. So the reaction is of order A with respect to A and of order B with respect to B. Thus the overall order would be A plus B. Let's define the order of reaction. It is defined as sum of all the exponents to which the concentration terms in the rate equation are raised, or the number of reactant molecules whose concentrations alter as a result of the chemical change. So the chemical reactions are classified as on the basis of order 0, first, second, third, and these orders provide information about mechanism of reaction. Orders की बेस पे हम chemical reactions को इन classifications में put करते हैं. 0 order reaction, first order reaction, second order reaction और third order reactions. और ये orders जो हैं वो basically हमें mechanisms of reactions के बारे में guide कर रहे होते हैं. Here are the general expressions for a particular order. अगर हमारे पास सिंगल रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो जो उसका रेट एक्सप्रेशन होगा वो होगा रेट इक्वल्स टू के इंटू ए. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंट है 1, तो जो ऑर्डर होगा वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा. नेक्स्ट, अगर हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो 2 रिएक्टेंट्स हैं और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो जो रेट होगा वो होगा के इक्वल्स टू ए रेज टू पावर 2. सो जो एक्सपोनेंट होता है वो हमें ऑर्डर दे रहा होता है बेसिकली. सो यहाँ पे हमारे पास 2 डिफरेंट रिएक्टेंट्स थे A एंड B. A का जो एक्सपोनेंट होगा वो 1 होगा, B का जो एक्सपोनेंट है वो भी 1 होगा. सो 1 प्लस 1 वुड बी सेकेंड. यहाँ पे जो है हमारे पास 3 रिएक्टेंट्स हैं, A रेज टू पावर 2 while B raised to power 1. So 2 plus 1 would be 3. So third order reaction होगा. Similarly यहाँ पे जो powers होंगी वो individual होंगी. A raised to power 1, B raised to power 1, C raised to power 1. So 1 plus 1 plus 1 would be equals to 3. So it would be third order reaction. Let's see the orders in detail. Zero order reaction is a chemical reaction wherein the rate doesn't vary with the increase or decrease in concentration of reactants. जहाँ पे rate of reaction concentration पे depend नहीं करता. For example, photochemical reactions like photosynthesis. इन reactions में reactants की concentration rate of reaction को affect नहीं करती. Here is the graph for the zero order reaction. Next is the first order reaction. It is a chemical reaction that proceeds at a rate that depends linearly on only one reactant concentration. वो chemical reactions जिनमें rate सिर्फ एक reactant की concentration के साथ change होते हैं, vary करते हैं, उन्हें हम first order reaction कहते हैं. For example, decomposition of nitrogen pentoxide. इसका जो rate expression आता है वो हमारे पास rate equals to K ब्रैकेट में N2O5 और जो पार है that is 1. So the reaction is first order with respect to the concentration of nitrogen pentoxide.
These are the graphs for the first order reaction in which you can see जैसे जैसे जो reactant है उसकी concentration कम हो रही है वैसे वैसे जो rate of reaction है वो भी कम हो रहा है. So जो rate है वो सिर्फ एक reactant की concentration पर depend कर रहा है. Next there is a term called pseudo first order reaction. It is a second order or biomolecular reaction that is made to behave like the first order reaction. This reaction occurs when one reactant material is present in great excess or is maintained at a constant concentration. वो reactions जिनमें दो molecules participate करते हैं और जो order है वो दोनों molecules पर depend भी कर रहा होता है, लेकिन हम एक molecule जो है या तो उसकी concentration बहुत ज़्यादा ले लेते हैं या उसकी जो concentration है उसको हम constant रखते हैं, जिसकी वजह से जो rate of reaction है वो उसकी concentration पे depend नहीं कर रहा होता, वो independent हो जाता है. For example, when methyl iodide reacts with water, so इस reaction में जब हमने water बहुत ज़्यादा excess में ले लिया तो water पे जो rate of reaction है वो depend नहीं करेगा. So rate would be equals to K into methyl iodide into water. So सिर्फ ये methyl iodide की concentration पे depend करेगा. That's why it is pseudo first order reaction. Here is the graph for the pseudo first order reaction, where we have plotted time on x-axis and concentration on y-axis. और pseudo first order reaction में जो gradient है वो constant नहीं होता, वो vary कर रहा होता है with time. Let's discuss a question. Hydrolysis of ethyl acetate into acetic acid and ethanol in the presence of mineral acid is frictional order reaction, pseudo first order reaction, first order reaction, second order reaction, and the correct option is pseudo first order reaction. Next is the second order reaction. It is a chemical reaction wherein the sum of the exponents and the corresponding rate law of the chemical reaction is equal to 2. ऐसी chemical reactions जिनमें rate depend कर रहे होते हैं दोनों reactants की concentration पे, उन्हें हम second order reactions कहते हैं. For example, when NO combines with O3, rate expression is rate equals to K into NO into O3, यानी कि ozone. So sum of individual orders gives overall order of 2. So अगर हम पहले reactant के लिहाज से order देखें तो it would be 1, और अगर हम ozone के लिहाज से देखें तो it would be 1. So 1 plus 1 would be 2. So it would be second order reaction. These are the graphs for the second order reaction, जिस पे जो rate है वो दोनों concentrations के साथ, दोनों reactants की concentrations के साथ vary कर रहा है. Next is the third order reaction. It is a chemical reaction where the rate of reaction is proportional to the concentration of each reacting molecules. In this reaction, the rate is usually determined by the variation of the three concentration terms. ऐसे chemical reactions जिनमें rate जो है वो तीनों reactants की concentration पर depend करता है, उसे हम third order reaction कहते हैं. For example, when FeCl combines with potassium iodide, rate expression is rate equals to K FeCl3. इसका जो एक्सपोनेंट है वो 1 होता है और जो पोटेशियम आयोडाइड का एक्सपोनेंट है वो 2 है. सो जब हम इंडिविजुअल ऑर्डर्स को ऐड करेंगे 2 plus 1 it would be 3. So it would be a third order reaction. So here is the graphical summary of all the orders. ये जो ग्राफ है ये जीरो ऑर्डर के लिए है जो कि पैरेलल जा रहा है एक्स एक्सिस के. फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो ग्राफ है वो हमारे पास लीनियर है, जबकि सेकंड ऑर्डर के लिए जो ग्राफ है वो हमारा थोड़े पास वेरी कर रहा होता है, कर्वी ग्राफ आ रहा होता है. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल जिसमें से एज सच एमसीक्यूज पूछे जाते हैं कि यूनिट्स ऑफ के क्या होंगे फॉर एन इंडिविजुअल रिएक्शन ऑर्डर. अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो यूनिट्स होंगे हमारे पास m इंटू पर सेकेंड. अगर वो फर्स्ट ऑर्डर है तो पर सेकेंड आएगा, और अगर वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो इट वुड बी पर मोलर पर सेकेंड. सो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होते हैं डाटा पर सेकेंड.
There is another order of reaction, that is fractional order. The order of fraction is usually positive integer or a zero, but it can also be in fraction or negative value. So order of fractions है वो positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है, zero order fractions भी हो सकते हैं, और it can also be in fractions यानी कि decimal points में भी हो सकता है. For example, when CH3L3 combines with chlorine molecule, rate equation is K equals to CHCl3 into chlorine, जिसका जो एक्सपोनेंट है वो हाफ है. सो CHCl3 का जो ऑर्डर होगा वो 1 है, और Cl का जो ऑर्डर है वो हाफ है. सो जब हम लोग इन दोनों इंडिविजुअल ऑर्डर्स को ऐड करेंगे 1 into half, it would be 1.5. सो द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स विल बी 1.5. सो जो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन है वो हमारे पास फ्रैक्शनल आया, डेसिमल पॉइंट्स में है. Here we have a practice MCQ stated as the second order reaction becomes first order when one of the reactants is limiting, one of the reactants is in large excess, none of the reactants is in large excess, both reactants is in large excess. So the correct answer is when one of the reactants is in large excess. It is basically pseudo first order reaction. So this was all about the lecture. I hope you have understood it very well, and thank you so much.